Ji, Assalamualaikum everyone, it's Shoayb Khan and welcome to the live update of Crypto Affairs. It's 30th of March, 9 p.m. in the evening, and hopefully you all be doing great. And we're gonna have a discussion where BTC is headed now. It just tapped all our ranges on the upside and was gonna be coming next. So the initial segment of this video will be in English, of course, for our international audience, and then we're gonna switch the language for your queries and all that kind of stuff. So first of all, let's have a look on Bitcoin here. Okay, so that was our setup. Let me switch to 3-hour chart here. We tapped at 29,132 level. A lot of people been asking me what was so convincing about that we're gonna reject from, and what was the science behind that 29,200 level. So if you don't remember, well, I gave you this analysis a while ago, and it's really simple. If you go back and check the Wednesday 1st of June 2022, you're gonna have a experience of seeing this equal lows here at this point, right? So if you just a little bit adjust it at this level, you're gonna get the 29,200 level. Well, it's an index, so uh, there might be a difference of $30-40 there. So fast forward to this point today, we can see the rejection of this point. It's actually the previous untapped equal lows which just tapped again today, and a lot of people been liquidated who were shorting, even despite I was warning them very clearly that the OI is building up, it's not a time to short. But again, I'm not tooting my own horn here. I'm not that kind of a guy, while a lot of people think that I do. But the thing is that it's just a professional courtesy. While you were looking at the Twitter CD and everyone is telling you to go short from 27, 28K, like we are going back to 24,000, 25,000, and then you see the unwanting spike up towards 29K. Provided with the fact that SXP, XRP, and Q1T, coins like that, liquidated the 80% of the retailers yesterday, and people get sour, and then they just come back to me and see like, I got to face a lot of shit for just warning them. Well, I'm not charging anything for that. It's just a professional courtesy, and this is where the experience lies. Because when you look at the market from the uh, perspective of the market maker, you can see whenever the retailers get euphoric, this is the time to rug pull them, and this is the prime example that just happened yesterday. And now they are just crying over it, why they were shorting at this point and all that kind of stuff. Well, it was pretty much clear to me, and I've been warning to not short. We may tap 29K. I have also sent these voice notes on the Telegram group, our Crypto Affairs Free Telegram group, and I've been also updating everywhere, even at the Discord and at Twitter. Well, what can be said? Let shorters be bygone. So coming back to it, what's the situation right now? I'm just gonna open the January setup here. Okay, so that was our Fibonacci here. We are still, well, it's still valid because it's not fully absorbed yet, because there's no candle, exactly being open and close above than that. So I'm just talking about the 3-hour candle here. So it's still valid, and the range is still valid of equal lows, and we're gonna be bearish below this level. So we are back to this chop zone again. This entire zone of the 28,900 to 26,600 is a choppy zone. Well, as soon as the shorts start to build up, which I guess it's already starting. I haven't looked at the OI and the you can say the aggregated data, but as soon as the shorts gonna build up, we may go back and revisit this range, the 29,000 once again, and then we're gonna drop. So it will gonna move up like this. I don't think we're gonna be going in an exact
in a straight line back to these equal lows and below than that. Of course, we have seen the huge rejection because a lot of people have been booking their profits here, and the 5 minute or even the 15 minute candle is really vicious. It was just the drop of almost, how best to describe it, yes, $1,000 in just the matter of 30 minutes. So again, yeah, we can all leave this scenario here, or it will gonna breach the ethical harmony of trading. So it's pretty much clear we're gonna go back above, retapping the 29K again. I already explained that in the post that I posted in Telegram. So if you're missing out on that, please make sure to join, so you may get the updates timely. All right, so this is where the BTC is headed, and let's talk about the altcoins here. The alts are pretty much bleeding here. The dominance is still, I think the dominance tapped the 48%. Yeah, it actually did, and that was the highest point, if I'm not wrong, since June, and trading will start to get stuck. All right, here it is. That's the highest. Yes, it was the June 11th of June. We went as high as 48 percent, and we tapped this highest point in the dominance again. So that's why we saw the BTC moving, all that pumpy stuff, and the alts were bleeding, and now it's really, profusely bleeding at this point. So the continuation of bleed will be here until we tap this. Let me check the 3-hour chart. Until we go below this point of dominance, that of 47.54%. So let us reclaim this, and once we reject from this point, retest it, and then we're gonna go back down. And if the BTCs go sideways, well, the alts will gonna boom. There's a money here, and the money is gonna be flowing from BTC to alts, and we can have a good chop around here at the total market cap also. So that's about the BTC, and let's have a look on Ethereum. All right, so in our last update, we were seeing this 1826 point. We rejected from it near dollar perfect value yesterday. We dropped down, and then in today's chop, while BTC was breaching the 29K value, we saw this 1826 being tested again, and then drop from here also. So that's a point of almost 2% on spot. If you were shorting the Ethereum, it was all good. So I was warning you guys to not short below 1800 point, and we can see why. You can see the pretty much clear reason why was that. So it's pretty much obvious here. Let's have a look. Talk about the elephant in the room, the SXP. We had our analysis a couple of days ago. We had our equal highs, it got breached, and the POI, and even on the current resistance, well, it was, the entire move was more than 100%, but we're gonna count towards the POI from our eco highs. That was the 37% of the move. That was a really good move here, but again, it will gonna die out soon. But a lot of people also get liquidated, and the major portion and the major chunk of liquidation went to SXP, and the crown, it's on the SXP head, liquidating the shorts. Why is that? Because they thought, all right, this is the resistance, and now it's coming back down, so let's start shorting from 43-45 level, and they kept their liquidation, not even stop losses, and they above the 50 cents mark, and the price went as high as 59, almost at 60 cents, liquidating all of them, and now it's coming back down to this grabbing this liquidity and then coming back down to this range. So again, I'm warning you to not short this coin, SXP or whatsoever, even if any coin is on your radar pumping beyond the 6% or the 8%. So don't do that until it stabilizes. Well, the stabilization is not something like what's happening with the trading view today. Is it me, or it's lagging for everyone?
Uh, yes. All right. So stabilization is not something like the coin moves up and now is coming back down, so you start to short. Well, stabilization is more like the coin moves up, it comes back down, and then it reclaims the range and then start to move the sideways. Well, this is known as the stabilization. So we gotta wait for it, and we until the range develops, until you see the rejection from breaching the support and retesting it as a resistance, then you can see, all right, it's all good to go to short or long in the vice versa scenario. So don't go ape in, because it might go up. They are just resetting your so-called indicators, and then it will gonna hunt your liquidity again. So remember the two players theory, you and the market maker. The market maker is an apex predator, and he will do anything and everything to grab your liquidity. So start to think from his or her point of view. So that's all about the cryptocurrency. We're gonna switch to the gold here. I gave you a short quick scalp in gold a few hours ago in on the Telegram. I was pretty much aiming for this liquidity here. 1965 was our target, and is that a 5 minute? Let me open my chart. I don't know why is it so hanging so much. Yeah, here it is. So I was pretty much aiming for that 1965 point, and we shorted from 1970. It dropped straight to 1965, went shoot through it. Well, I also took a personal trade on gold from 1970 to 1966 again, and then it went up. I might short it again, so I'm just still eyeing on it, the range, and how it will gonna play out. And well, I think I've cleared my analysis, but if you look at the 4 hour chart, we are making a a bearish harmonic here. Just to emphasize it, I'm just gonna draw it for you. Here's the bearish uh, harmonic here. So let's wait for a bit, because we are seeing the 4 hour bullish engulfing here, and we are also leaving this area of 1974, the B point. So let it move up, let it stabilize above the D point, creates its D point, and then we're gonna be looking for shorts again. I'm just interested at this point from 1994 to 2000 level. I'm gonna be shorting again, just for the for my weekly targets. And the reason it's pumping here, because the dollar, the DXY index nosedive earlier in the evening. This is the reason. So of course the dollar will gonna regain its power again, and on this side it's making a harmonic here again. So we can see the recovery. The 105 is still valid. So you can see here it will gonna stabilize, or creates a C point, and then it will gonna move up. So the gold, until then, until it's bleeding, the gold will reach to the 2000 level point, the close to it, and then everything will gonna bleed again, whether it is the Dow Jones Index, the SPX, the BTC, or the gold itself. So that's the major update of today. And if you have any queries, you can ask me, or if there's any confusion or any chart you want me to look at, you can ask me here, right? So here we are. हाँ जी सर, के एस एम एवेक्स 6 मंथ से स्टक हूँ। मारी अहमद, मुझे अपनी आप एंट्रीज़ बता दें, आपकी एंट्रीज़ क्या हैं, सो हम उस पर एनालिसिस देख लेते हैं। अच्छा जी, currently short is having less loss, but I'm scared if BTC wick downwards, my long will also be liquidated. STX guideline required. Dialogues, I think you should be pretty much specific about where's your entry and how the situation is looking at. And you can text Mustafa, you can DM him, and we're gonna have a look on your stuck up trade, and we're gonna guide you. All right. अच्छा जी, BNB डॉट पे एनालिसिस कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। आज ट्रेडिंग व्यू पता नहीं क्यों स्टक हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा जी,
आपका BNB स्टिल रेंज बाउंड ही हुआ है, लोअर लोज ही बना रहा है। फॉर योर कंसिडरेशन मैं आपको दिखा देता हूँ चैनल एक ड्रॉ करके। इसी चैनल में ये कि हम चलते हुए जा रहे हैं, डाउनवर्ड आपका चैनल है। और अगर आपको PA में समझ आता है तो यू कैन सी दी IBOS here, you can also see the coming up BOS here, so it's still bearish here। BNB जो है आपका लोअर लोज बनाता हुआ जा रहा है, इसने आके वापस जो है टैप अंडर $300 को करना है, तो ये इसकी सिचुएशन है। इट्स एक शिट कॉइन बन चुका है, मतलब ये कि CZ की हरकतों की वजह से जो भी मामला आते हैं लोग इतना उसको वो लेके चलते हैं। सो दैट्स द रीज़न ये सिचुएशन है। सो BNB की ये मामला चल रहा है। अच्छा, उसके बाद डॉट पे, अच्छा आल्ट कॉइन पे आप लोग देख लो कि BTC की भी ये सारी करने के बाद भी जो है आल्ट कॉइन स्टिल आपके डाउन ट्रेंड में ही चलते हुए जा रहे हैं। इट्स अ 4 आवर चार्ट, यू कैन सी द डाउन ट्रेंड ऑफ कंटिन्यूएशन बुलिश। डॉट तब होगा जब ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर लेगा, 6.37 के ऊपर स्टेबलाइज हो जाए, देन ये ऊपर की तरफ है, वरना ये कि नीचे ही इसने आना है। कितना नीचे आना है, यू कैन हैव अ लुक हेयर। ये आपके लोस, ये आपके हाइज 0.5, और ये नीचे पूरा जो आपका BVZ है इसको यहाँ क्लेम करने आना पड़ेगा 5.744 की तरफ। सो ये ब्लीडिंग जो है थोड़ी अभी देखते हैं इस कंटिन्यूशन में रहेगी, ठीक है। अच्छा, SCRT एनालिसिस, SCRT भी शिट कॉइन है बहुत, इसमें वॉल्यूम कम होता है, पम्प डंप के लिए काम कर रहे होते हैं लोग इस पर काफ़ी। ये भी पहले ही मैंने इसका एक ही दिन मैंने इसका सिग्नल दिया था, वो हमने मिंट कर लिया था, उसके बाद मैंने कभी इसको देखा भी नहीं है। देख लेते हैं इसको। काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं ये 3 आवर चार्ट यूज़ करने की क्या तुक है, तो कुछ भी नहीं है, एवं सेक्सी लग रहा होता है। अच्छा, SCRT में टॉप टू बॉटम देख लो, 0.5 अभी रिक्लेम होगा 65.4 सेंट्स पे, और हार्मोनिक एक क्रिएट इसने किया हुआ है, तो इफ़ इट्स लूज इज सपोर्ट हेयर तो ये नीचे, एक सेकंड इसको सही कर दूँ, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट। ये वाला ठीक है, तो ये B पॉइंट जो है ना ये इधर नीचे आ जाएगा इसकी तरफ यहाँ पे। अच्छा, डस्क पे इतना कोई रोला डाला था कसम से यार, मैं क्या बताऊँ, अच्छी खासी मैंने बिल्कुल लिटरल बॉटम उस दिन जो है बाय करवा लिया था। 33 DMs मेरे पास आया है, लिक्विडिटी ज़ीरो, मेरे ख्याल से टोटल 1-2 DCA मैंने करे थे, उसके 1.125 जो है उसकी टोटल वो हो गई थी बाइंग जो थी मेरी पोर्टफोलियो की। एंट्री क्या थी, एंट्री में दिखाता हूँ कहाँ थी, 0.169 ये एंट्री थी। सर TP, सर TP, सर लिक्विडेट हो जाऊँगा, सर ये हो जाएगा, सर वो हो जाएगा, 9.4% अप हो गया है। मैंने कहा कि ठीक है भाई कर लो, रुलते गए 50 बढ़िया ही, जैसे मर्जी आप लोगों की कर लें भाई, मैं क्यों सर का दर्द पालूँ, फिर मैं भी बुक करवा देता हूँ प्रॉफिट में। अच्छा, SXP में दे चुका हूँ ब्रो, SXP सॉरी फॉर दैट। SXP का वो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लेना। MKR एक वो भाई ने टाइम एंड डेट लो वो नोट करने के लिए भी दिया था कि 27,500 से जो है ना BTC यूं गिरेगा, कर देना शॉर्ट। वो एक लड़की की जाके कमेंट में नीचे मेरी पोस्ट के जाके वो कर दिया। अब वो प्रॉब्लम यू ही कि बंदी का रिप्लाई भी नहीं आया, अकाउंट भी उड़ गया बेचारे का, मैंने भी ब्लॉक कर दिया। आई डोंट नो मैन, इस तरीके के उड़ते तीन नहीं लेने चाहिए। खैर, मेकर में मैं इसको मेकर बोलता हूँ, सो बर्दाश्त कर लें। प्रीवियस EQ हाइज मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये टैप हो चुके हैं। मेकर अभी आपका कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, सो अक्यूमुलेशन ही कर रहा है ये यहाँ पर, ये वाला पॉइंट नहीं, मैं ये वाले भी कंसिडर नहीं करूँगा। आई एम जस्ट गोना कंसिडर दिस एंड आई एम जस्ट गोना कंसिडर दिस। ये एक्यूमुलेशन कर रहा है, इससे यहाँ पे बाहर निकलेगा तो इट विल गोना गो अप
तो ये एक झटका नीचे मार सकता है इसको नीचे आने के लिए। तो टारगेट इसका जो हो सकता है मोस्ट लाइकली वो आप रखे हैं फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, ठीक है, 782। ठीक हो गया जी। अच्छा, हे आई फाइंड यू फ्रॉम एफ वी यूर जैम मैन, वेरी गुड नॉलेज यू हैव, थैंक यू सो मच विक्टोरिया एंड आई अप्रिशिएट इट। आई डी यू एस डी टी, IDUSDT, it will also gonna be tapping the lows again because ये तो अभी आपका आर्प की तरह जो है भी लिस्ट हुआ है 2.5 तक, तो ये नीचे की तरफ आएगा, ज़रा इसको जाने दो, इसमें अभी बाइंग वगैरह नहीं करो। मैं न्यू लिस्टिंग वाले कॉइन पे जो है ना मना ही करता हूँ, क्योंकि ये जो ऊपर वाली विक्स हैं, सेलिंग विक्स हैं, ये वही लोग फंसे हुए हैं, ड्रॉप वगैरह में मिला होगा ना, होते हैं जस्ट सेलिंग इट। तो ट्रेडिंग के जो है ना इस पे ये भी है नहीं। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद दैट। इस बाइनेंस चेन सेफ मैडम आस्क में BNB चेन में फंड्स रखे हुए हैं इथीरियम या इथीरियम, यार इथीरियम भी सेफ है, BNB चेन भी सेफ है। BAP20 वाली हार्डवेयर वॉलेट में अगर जहाँ बात करी जाती है तो मैंने भी इथीरियम और इसमें मैंने स्प्लिट करके रखा हुआ है बाइनेंस चेन पे। बाइनेंस चेन इसलिए भी सही है क्योंकि उसमें फ़ीस बड़ी कम लगती है, आपकी जो मूवमेंट हो रही होती है और काफ़ी फास्ट होती है। इथीरियम चेन जो होता है वो आपका सिक्योर है और नेटवर्क की आप उससे खैर नहीं मतलब ये कि मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन फ़ीस जो है काफ़ी ज़्यादा होती है और वो दूसरे उसके मसले मसाइल के उसमें लिक्विडिटी इतनी रखो ये रखो, तो आई गेस दे आर बोथ सेफ। आई डोंट टिल टूवर्ड्स वन साइड के ये ज़्यादा सही है वो ज़्यादा सही है, लेकिन मैंने दोनों में डाइवर्सिफाई किया हुआ है। ठीक है, मास्क पर एनालिसिस कर दो। ओके, दिस इज़ द लास्ट वन एंड विल बी कॉलिंग अ डे। मास्क पर एनालिसिस आपके पास 3 आवर का चार्ट है, बड़ा अच्छा सा एक हार्मोनिक था। ये मेरे ख्याल से पूछा भी था किसी ने, मेरे ख्याल से शिरीष भाई ने पूछा था मुझसे मास्क का कल चार्ट टॉक में, तो हार्मोनिक के बारे में। हाँ, वो गिरना भी वहीं तक ही आ गया है कि ये हार्मोनिक वैलिड है या नहीं है। आई थिंक यस, ये किसी ने पूछा था। तो ये एक बी पॉइंट था आपका, ये बी पॉइंट अभी वाइल वी आर हैविंग दिस डिस्कशन ये टैग हो गया है, तो ये इसका सिनेरियो है। ठीक है, तो ये तो पूरा हो चुका वैलिड। अब इससे यहाँ से यहाँ तक का एनालिसिस देख लो और अब सिंस इसने कर लिया है आगे तक, तो इसकी जो प्रोफाइलिंग होगी वो यहाँ तक होगी। यस, नीचे आएगा, ये आना चाहिए इसको नीचे 5.8 तक आना चाहिए इफ़ इट्स कंटिन्यू टू लूज़। थोड़ी सी ये वापस ले आके यहाँ पे इसको रीटैप करेगा, दैन 5.8 तक आने के इसके चांसेस हैं। ठीक है, सो ओ आई एम सॉरी, चार्ट के बजाय ये शेयर हो रहा था भाई, ये एनालिसिस था। सॉरी, मैंने वो किया हुआ था। ये वापस 0.5 की तरफ जाके नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, 5.9 की तरफ, 6.2 0.5 इसको टैप करने के बाद फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा जी। Shoaib bhai, you said ARB gonna rug pull a lot of people. What do you think about it? Of course, it will gonna rug pull a lot of people. जो लोग अभी बाय कर रहे हैं, ये 50 पे जाने वाला है, 80 पे जाने वाला है, एप की तरह और उस तरीके की तरह, तो भाई खुदा के बंदो उन लोगों की मत सुनो, ये खुद लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए लगे हुए होते हैं कि आप लोग बाइंग करो और वो एग्ज़िट ऊपर की तरफ कर लें। सो डोंट डू दैट। ये सिनेरियो है मेरे नज़दीक, जब तक उसकी पूरी रेंज डेवलप नहीं हो रही, मेरे नज़दीक शिट कॉइन है। अब कोई भी आके कितना भी प्रोजेक्ट शिल करे वो करे, भाई मेरी फुप्पी के लड़के ने नहीं किया आपको लॉन्च। मैं देखता हूँ टेक्निकल एनालिसिस, मैं देखता हूँ चार्ट, मुझे चार्ट पे वो शिट लग रहा है, इट्स अ शिट, सिंपल इज़ दैट। सो आई एम नॉट गोना बाय इट, आई एम नॉट गोना ट्रेड इट। दूसरी जगह पे
ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सिंपल सा ये उसूल है कि भाई आप सुकून से जब आप एनालिसिस करते हो तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको प्रोलॉन्ग उसमें आप रोक सकते हो जो भी उसके मामलात हैं। लेकिन अगर आप शेलिंग के पीछे जाते हो कि नहीं ये है वो है, कस्में उठाने लग जाते हैं लोग, घर बेच देते हैं उन चक्करों में, तो आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट माई टाइप ऑफ एनालिसिस। और मैं इतना इमेच्योर बंदा नहीं हूँ कि मैं किसी चीज़ की शेलिंग करवाऊँ या वो करके। ठीक है, आप एनालिसिस दे सकते हो कि फॉर सपोज़ अभी कार का एक मैंने दिया था और XDB का दिया था। XDB का मैंने पहले भी दिया था, 70% हमने उसमें मिंट करे थे और वो स्टिल 17% जो है वो पंप हो के अभी वो दोबारा उसी बाइंग रेंज में वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं जाके शेलिंग कर रहा हूँ कि नहीं भाई जाके घर बेच के ये ख़रीद लो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सिंपल सी मैंने बात कही है कि भाई मैं खुद 1% भी नहीं, मैं जस्ट $100 उसमें मैं इनपुट कर रहा हूँ, एंड आई एम गोना लुक एट इट के बाद में 1-2 महीने बाद में जाके देखूंगा कि उसकी क्या वो होती है। सेम गोज़ फॉर द बेसिक। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। ठीक है। क्रिप्टो नोन कैसा बंदा है पता नहीं यार, मैं ट्विटर पे नहीं देखता ज़्यादातर लोगों को, मैं सिर्फ छोड़ो यार। सिर्फ वो टांगे खींचने के लिए कैपो जाने के हम पीछे पड़े होते हैं मोस्टली। जो गोरे हैं कुछ हैं, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है मुझे। ML वाले लोगों को पता है कि अक्सर जिसका वो जाके भेजते हैं कि ये बंदा कैसा, मैं जाके ट्विटर की प्रोफाइल खोलता हूँ और वो पता लगता है वो मैं खुद उसकी प्रोफाइल से ब्लॉक हुआ हूँ। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। आई डोंट केयर इफ़ somebody is making million or not, it's just their fate. I just do what I do and I just look at the charts without any bias, and that's how it is, and that's the beauty of the technical analysis, because you have to take the bias out of it and then you have to see what's the market been telling you, right? So thank you so much. It's really nice talking to you, and if you are missing out on updates, आप टेलीग्राम के जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें। सिंपल जाके उधर सर्च कर लें ग्रुप के उस पर। और बल्कि मैं अभी हाथ के हाथ जो है लिंक शेयर भी कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को नहीं वो मिलता, तो उधर जो है ना फ्री के अपडेट्स और सिग्नल जल्दी एक आ जाते हैं ग्रुप में आने के लिए, तो वो वहाँ पे जो है इजी वो रहता है। तो इट्स अप टू यू इफ़ यू वांना बी गेटिंग रग पुल्ड बाय सम biased people or if you just wanna make some money। ठीक है जी। तो ये आपके पास लिंक आ रहा है, ये आ गया आपके पास। एंड इफ़ यू आर नॉट इन मेंटोरिंग लॉन्च यू कैन ऑल्सो कम एंड जॉइन अस फॉर डेली सिग्नल्स एंड ऑल दैट। अपडेट्स जो भी होती हैं आपकी तो उसमें आपको मिल जाएंगी। सो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। कोई आपका दोस्त अहबाब कोई रिश्तेदार क्रिप्टो को स्कैम कर रहा है या वो टपाटप लॉस कर रहा है तो इट्स अप टू देम। बट कोई आके अगर अपना फ़ायदा कर लेता है, कोई चीज़ समझ लेता है एनालिसिस के तौर पे, तो आपके लिए भी जो है सदका जारी है वो हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आई विल बी अपलोडिंग दी लर्निंग वीडियोस राइट अवे। अभी 1 से 2 घंटे के दौरान 2 लेक्चर हैं अभी हैं, कंपाउंड ऑर्डर ब्लॉक के और ऑर्डर ब्लॉक के, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। सो मेक श्योर टू सी इट एंड सी इफ़ देयर्स एडिंग अप एनी good thing in your technical analysis or adding up any value to your perspective and how do you look at the market. So thank you so much. It's me Shoayb Khan signing off, and I'm gonna see you soon. And yeah, don't let the market surprise you. Allah Hafiz.